Hey guys, a very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. As always, I'm superbly excited. थोड़ी सी देर लग गई हमें, this time setting it up. It took us some time, but देर है दुरुस्त, and we all know how the saying goes, सबर का फल मीठा होता है, right? And I feel this conversation is going to compensate for much Uh, more than the time delay. Hi Niranjan, very warm welcome to the Fisdom Wealthcast. Sorry, Nirav, I can't hear you. Can you hear me now? Am I audible right now? Well, I guess Niranjan is yet, just resetting the system. Meanwhile, guys, I also put out a post on the social media handles about today's Wealthcast, and I had invited a lot many people to put up their questions that they may have for Niranjan. So, guys, please do use the comment section, post in as many questions as you have, and let me see in the due course of time. I would absolutely try and pick as many questions as I can. So, Niranjan, you have reconnected. Can you hear me? Yes, now I can hear you. Can you hear me clearly? Yeah, perfect. Perfect. Okay, chalo. Okay. Let's start. So guys, this is Niranjan Avasthi, the head of products at Edelweiss Mutual Fund. And today we are going to be talking about a variety of things. So, Niranjan, before we get deeper, there is one question that the Janta always Yes. has. चाहे मार्केट Yeah. ऊपर हो या नीचे हो, चाहे वोलेटाइल हो या लीनियर हो, इवन फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एक सवाल जो हर Mhm. बार पूछते हैं वो है कि मार्केट क्या बोलता है. And what's your views Correct. on this? So right now, how do you read everything that's happening? Yes, I can. I could preempt this question for almost 15 years now since the time I'm in market. ये question हमेशा पूछा जाता है. And honestly speaking, most of us, including me and including everyone, is actually really clueless about what's going to happen. But yes, I mean, in the medium to long term, we do frame our views, and this is that we some of the things go right, some of the things go wrong. But yes, we do have a certain view at this point in time. Market हमेशा जैसे ही volatile ही लगता है, and that is the very usual answer which you will get. But beyond that, if you go to maybe look around the economy, what's happening, and how economy is preparing itself to gear up over the next few years. सो मेरे हिसाब से कोई भी इकोनॉमी को अच्छे से चलने के लिए तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, एंड आई कॉल इट थ्री बैलेंस शीट्स ऑफ द इकोनॉमी. One is the corporate balance sheet, one is the government balance sheet, and the third one is your individual balance sheet. और अगर हम ये तीनों बैलेंस शीट आज के तारीख पे देखते हैं, तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट बैलेंस शीट. कॉर्पोरेट इंडिया की जो लिवरेज है वो काफी कम हो चुकी है. ओवर द लास्ट 3 years 4 years we have seen drastic reduction in leverage of many companies and corporates, which is actually helping these corporates to set up new projects, invest more in capex and all. Within corporates, the most important part of the economy is the banking sector. और अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीएस के इश्यूज या रिकवरी के इश्यूज थे ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट 10-12 years, वो काफी हद तक कम हो चुके हैं. ग्रॉस एनपीए विच वाज अराउंड 12% is now close to maybe 5-6%. Net NPS has fallen. So banking sector काफी strong है आज के तारीख में, and that is the reason we say corporate balance sheet which includes the banking sector is very healthy. दूसरी तरफ है आपका government balance sheet. So government balance sheet is also very clean, very credible after many years. Since last few years, we have seen the numbers which are posted, whether it is fiscal deficit, whether it is borrowing program announced by the government. ये काफी सारे चीजें credible हो चुके हैं. And of course, because हिसाब से फिस्कल डेफिसिट मैनेज हो रहा है, जिस हिसाब से रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं. इफ यू सी द जीएसटी कलेक्शंस कंसिस्टेंटली फॉर more than 6 months now, it is above 1.4 lakh crore, and all those stuff is actually making the
government balance sheet also very clean and credible. And the third part is the individual balance sheet. और इंडिया में हमेशा से individual balance sheets काफी clean रही है. As Indians, we don't like to take too much loan unless it is for a car or maybe a house. We are not, very comfortable taking loans in India. We are more savers than taking creditors, and this piece is also very very clean today, which will actually help gaining demand and bringing demand to the corporate. So if you see a Tino balance sheet, whether it is corporates, whether it is government balance sheet and individual, all are in their best of the health today, which is very very important for any economy to run. अ, इससे 2-3 चीज़ें होगी. वन इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, नए-नए प्रोजेक्ट्स आएँगे व्हिच वी आर ऑलरेडी सीइंग इन राइज़ ऑफ प्राइवेट कैपेक्स व्हिच इज़ हैपनिंग. क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा. अगेन वी हैव सीन credit growth, bank credit growth, which was around 5-6% a year back. Today it's clocking around 13-14%, which means consumers as well as corporates are taking leverage slowly and steadily, which in turn, uh, you know, gives a big boost to your GDP, which we are seeing slowly, steadily. Our GDP growth is coming back to pre-COVID levels. We are well above the pre-COVID levels, and of course, India. If you see the top 10 countries or even G20 countries, India is the fastest growing country. अब ये सब जब चीजें होंगी, आई डोंट थिंक मार्केट कैसे होगा इसके बारे में कोई सवाल होगा over the next 2, 3 or 5 years or even decades. See, अगले 3 महीने और 6 महीने में क्या होगा, ये तो काफी ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पे डिपेंड करता है, whether it is maybe FIIs, जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स है. बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट इफ यू आर अ इन्वेस्टर. इट इज इम्पोर्टेंट इफ यू आर अ ट्रेडर. और अगर आप इन्वेस्टर है तो ये सब जो मैक्रो चीज है चेंज हो रही है, द वे इंडिया इज ग्रोइंग, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. आई थिंक सो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसके मुताबिक जो व्यू है इक्विटी का, मार्केट कैसे लगता है, वो आसानी से आपको समझ में आएगा. एंड देयर इज, आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी एनी फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस इफ यू बिलीव इन द इंडिया स्टोरी. Absolutely. I feel the biggest takeaway is that the India growth story is pretty much intact. जो growth trajectory है India की as an economy, it is pretty much solid and on track, and the same trajectory can be expected to be seen in capital markets also, as it reflects the same, right? So, काफी promising outlook है India की as an economy and as a capital market destination also. So, Niranjan, talking about the economy and the capital markets, we realize that, you also made a very important point that as Indians, we are savers, right? We don't really Right, like leverage as much. We want to, save as much as possible. I feel India has been transitioning, right? So, at the core, we are a high earning society. For a very long time, we have been a high saving society. Or right, आगे बढ़ते हुए I see a shift in the trend where from being high savers we are also becoming avid investors now. The right, adoption of investment instruments, especially the transition from moving from physical assets to financial assets, has been growing at a tremendous pace. At least पिछले 3-4 सालों में जो हम देख रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हो या पीएमएसएस या एआईएफ से, चाहे डीमैट अकाउंट्स के बारे में बात किया जाए, जहां पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स हुए इन जस्ट द पास्ट 2 years, right? It's almost like an exponential curve, exponential growth that has happened here. The space is booming. So कुछ दिनों पहले, I was talking to one of my friends who happens to be working at one of the reputed news outlets, and they were doing a coverage on a dilemma that many investors face. And I also realized that ऐसे काफी सवाल हमारे पास भी आता है, कि investors often have this confusion कि अगर इक्विटीज में निवेश करना हो तो क्या म्यूचुअल फंड सही रास्ता है या डायरेक्ट इक्विटीज किया जाना चाहिए. देयर इज an understanding that perhaps mutual funds are simpler, but maybe returns काफी अच्छे से डायरेक्ट इक्विटी में बनाया जा सकता है. So, okay, well,
we lost Niranjan for a moment. So, guys, I'm just getting to a superbly interesting question. So, hang on. I'll just wait for Niranjan to reconnect, and let me just pick it up from where I left it. Uh, so, Yeah, Niranjan, can you hear me? Yeah, I got your question, Nirav. yeah. So you're not visible right now. We can't Is quite. I can see actually. I don't know what is the issue. Okay. Perhaps if you could try reconnecting once more, I could wait. Can you see me? Nope. No, Nope. just a minute. Yeah, sure. So, guys, till the time Niranjan comes back, I'm just going to do a quick recap about the most important things he spoke about while giving an overview on the markets and the economy. The three most important things that he spoke about. I feel one must also, view the developing situation in light of these three verticals: the government balance sheets, the corporate balance sheets, and the individual balance sheets. India as a government, we have actually become far more stronger. There are many green shoots. In fact, in one of our recent publications also, we have highlighted most of this. Corporates are getting stronger and individual households are also getting stronger. So that's a quick recap. Niranjan, are we Yes, good? yes, Yeah. So that was the okay, biggest dilemma, right? I'm just picking from where I left. What yes, is the right way to go about equity investing? Should it be through mutual funds or should it be through equities directly? And I realized कि this is actually a question that we also receive. कई बार कई investors yes, से सवाल पूछते हैं. How are you going to, or how would you like to help them decide on this? right. So before that, just give me let me set the context by giving few examples over the last 2 years, which I've also tweeted about, talked a lot about often. So just a year back, it was Diwali, and I was you know in my hometown, which is Pune, and I was meeting all my relatives and all. And while everyone knows that I work in mutual funds, and I've been talking about mutual funds for almost 14, 15 years. No one was interested to talk to me about mutual funds. Uh, and I was surprised. Many of my cousins who are very young, who have just started earning 1 or 2 years back, were talking about cryptos and even direct stocks. And so I often don't talk much about mutual fund within relatives, because वो बोलता है ना, घर की मुर्गी घर की दाल मुर्गी बराबर. दाल बराबर. Yeah. Exactly. So I was just observing, and uh, since last 6 months, most of these young cousins, they have come back to me and have started talking about, I invested in this stock, but I don't know what to do now. While I made some money, but it was only in my books. I could not exit, and now I'm not able to find a solution. What to do? Should I start a SIP? Which mutual fund should I start? And all those questions started coming. Now, the interesting fact is, ideally, if you are a young investor, uh, you should take baby steps towards investing, whether it is equity or overall investing. Uh, and mutual funds is the first step which one should take, right? If someone is working, and most of my cousin work in IT sector, they don't have to do anything with economies or stock in research or anything to do. बस किसी ने बोल दिया, सुन लिया और invest कर लिया, और looking at the past trends of the stocks and all, they started investing. And that is not the right way. So whatever we discuss over here, what people are have been doing, at least the youngsters over the last 1 or 2 years, they've been doing it all ulta. पहले equity से start करो, direct stock करो, and then हाथ जलने के बाद they are coming to mutual funds. But the ideal way actually is, if you start with mutual funds, over a period of time, you equip yourself to invest in stocks by understanding the nuances of stock investing. uh, what people are already, I mean, actually doing in stock is just looking at tips and all, and they are investing. That's not the right way. Then the end result is very certain that you will not have conviction in what you have bought. Where even if you buy right stocks, if you don't study them, if you don't have that conviction, you will not end up holding them for a longer period of time. uh, and you end up
on the wrong side most uh, likely. Mutual fund is a very, very simple tool. You don't need to, worry about what's happening in the market. Uh, and, hand on my heart, over last 10 years or so, I've been part of product teams and all. And because I'm an access person, I'm not allowed to invest so easily into stocks and all. So actually, I've stopped investing in stock for almost 10 years now. While I study them, I look at the trends, I study sectors and all, but there is a, a fair amount of mental peace when I look at my portfolio, which doesn't require me to study it, look at what stocks to buy, when to exit and all. So it gives me a lot of mental peace. And I think so 80-90% of the investors over a longer period longer period of time would be good investing in mutual fund, unless they want some kick in their life, or they have passion to do stock investing, they have time to research them. So for 90% people, the answer is straight away mutual funds. For remaining 10%, if you have those three four things, one is time to put in and do research. Second is ability to do that research, have right tools, have right knowledge about it. And third, most importantly, having a right temperament, because in investing, uh, your emotions, temperament, and most importantly, in when you are investing in stock, uh, when you are investing in mutual fund, of course you need the right temperament, right emotions, and right behavior. But when you are investing in a stock, you need 4x of what is required in a mutual fund investing journey. So if you have all these three, then definitely those 10% should be investing in stock. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो आपने कहा कि लोग काफ़ी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वो काफ़ी हद तक हीयरसे के बेसिस पे करते हैं, जो कि जिन्हें हम टिप्स कहें या फिर आइडिया कहें या जो कुछ कहें, वो रिसर्च से नहीं आता, उनके जो आइडियाज़ आते हैं कई लोगों के, और यही कारण होता है Right. कि काफ़ियों को बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहता है स्टॉक इन्वेस्टिंग का, जबकि दिस शुडंट हैव एक्चुअली बीन द केस। यू डू इट राइट, that is actually one of the most wonderful things, पर Absolutely. हर एक को ये समझना जरूरी, I'll draw upon some mom level wisdom कि बिना अकल के नकल करना हमेशा नुकसानदायक होता है, राइट? सो Absolutely. यू जस्ट बिकॉज कोई और कुछ कर रहा है या किसी स्टॉक में निवेश कर रहा है डजंट मीन कि आप भी वो करें, राइट? उसके रीजंस अलग हो सकते हैं। और साथ ही आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे टच अपॉन किया कि एक होती है विलिंगनेस, राइट? इच्छा सबकी होती है कि स्टॉक में निवेश करें, पर एक दूसरा पहलू होता है जो कि होता है एबिलिटी, क्षमता की बात होती है कि आपके पास वो एक्सेस होना चाहिए उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा का एक्सेस होना चाहिए, आपको रिसर्च करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने कहा कि टेम्परामेंट, जो आपका बिहेवियर है, वो काफी कंट्रोल में होना चाहिए, राइट? It is an entirely different subject on behavioral biases. I feel I could do an entire session just talking about behavioral biases, but these are the things, जब तक किसी निवेशक को इन 3 पैरामीटर्स पे काफी हद तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक म्यूचुअल फंड्स इज द राइट वे। जिन्हें बहुत मजा नहीं आता हो म्यूचुअल फंड से, दे डोंट फाइंड इट वेरी एक्साइटिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट प्रॉफिटेबल थिंग्स आर ऑफन बोरिंग, right? समय लगता है, and you just got to stick to it and try learn, if not as your final destination, at least consider this as your segue into stock investing। उल्टे तरीके से मत जाइएगा, डोंट स्टार्ट ऑफ विद डायरेक्ट इक्विटीज और फिर हाथ जलाकर म्यूचुअल फंड्स में आने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड से सीख के एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि आगे जाके आप एक अच्छे स्टॉक निवेशक भी बन सकते हैं यहाँ से सारे लर्निंग्स लेकर। सो Right. निरंजन, नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, एक काफी नोन सा टॉपिक है एसेट एलोकेशन के बारे में, राइट? Right. लेकिन जब भी हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तभी अक्सर हम या तो इक्विटीज या तो डेट की बात करते हैं, दोनों में से वी से इक्विटी कितना परसेंट होना चाहिए, डेट कितना परसेंट होना चाहिए, और ये सबके बीच हम कई भूल जाते हैं कि काफी कई और एसेट क्लासेस भी होते हैं, जैसे कि Right. रियल एस्टेट, कमोडिटीज, करेंसी इफ यू कंसिडर इट एन एसेट क्लास एट ऑल, बट काफी ऑप्शंस है, राइट? जैसे वेरी पॉपुलर एसेट क्लास इक्विटी और डेट के बाद माना जाता है गोल्ड,
राइट? गोल्ड राइट, को भी काफी हद तक एक माना जाता है, एक एसेट क्लास माना जाता है। इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन काफी हाई है, लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीद लेते हैं इसे, बट ऑब्वियसली नॉट विद द राइट टेम्परामेंट दैट दे शुड बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, राइट? और जो फाइनेंशियल यू नो जो फाइनेंशियल एसेट के फॉर्म में जो गोल्ड मिलता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ देम डू इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ इट बीइंग एन इन्फ्लेशन हेज, कि कभी इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ती है तो ये गोल्ड जो एक काफी अच्छा सा हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। बट राइट, एकदम हाल ही में ईडलवाइस ने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है कि गोल्ड एंड सिल्वर राइट, ईटीएफ फंड ऑफ फंड लॉन्च की है, राइट? गोल्ड के बारे में तो काफी हमने सुना है, राइट, बट सिल्वर हम पहली बार सुन रहे हैं कि एज अ कमोडिटी, एज एन एसेट क्लास उसे देखा जा सकता है। So we want to hear more from you that how does gold serve as an asset class, and a whole lot more on how does silver serve as an asset class. राइट, राइट। So, very important point. First, let me talk a few seconds on asset allocation. Yeah, A lot of time I've seen asset allocation की बात लोग करते हैं, और अगेन ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जहाँ पर रिसेंटली सबसे ज़्यादा रिटर्न्स है वहीं पे हमारा एसेट एलोकेशन स्क्यू होता है। recency और bias. Yeah, रीसेंसी बायस होता है, और दूसरे तरीके से व्हाइल पीपल टॉक अबाउट एसेट एलोकेशन, बट हम जब एसेट एलोकेशन करते हैं वी एक्चुअली चेस एब्सोल्यूट रिटर्न्स। कि yes, लोगों को लगता है जब इक्विटी में सबसे अच्छे रिटर्न आ रहे हैं तो 80-90% इक्विटी में ही जाना चाहिए। बाकी 10% डेट डेट तो बहुत बोरिंग है। गोल्ड तो ऑलरेडी ज्वेलरी होती है, एंड व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन गोल्ड एज़ एन एसेट क्लास? अ, yeah. Niranjan, I think we lost you right now. Uh, so, guys, once again, today seems to be a कैन यू day हियर मी? for snacks. Yes, कैन यू हियर मी? ओके, राइट, राइट। yeah, सो yeah, yeah, एसेट please. एलोकेशन, हाँ, सो एसेट एलोकेशन की हम बात करते हैं बट काफ़ी कम लोग उसको एक्चुअली निभाते हैं। तो gold, particularly talking about gold and silver, both these are precious metals which have multiple usage like investment, jewelry, industrial use. Gold के बारे में हम काफ़ी लोग जानते हैं, it is a good hedge against inflation. It has done well. जब इक्विटी मार्केट्स ने खराब किया है, गोल्ड ने आपको आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा-सा बैलेंस किया है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द ओवरऑल ड्रॉडाउन्स। वोलेटिलिटी भी काफ़ी कम होती है, सो अगर इक्विटी का स्टैंडर्ड डिविएशन या वोलेटिलिटी ओवर लास्ट 10 इयर्स इज़ अराउंड मे बी 20-22%, गोल्ड की जो वोलेटिलिटी है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो लगभग 10% के आसपास है। सो इससे डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, और इसलिए गोल्ड तो पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है कुछ हद तक। सिल्वर अगेन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रेशियस मेटल। अगर हम इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, मल्टी कैप पोर्टफोलियो बनाते हैं, वैसे ही प्रेशियस मेटल में गोल्ड की जो क्वालिटीज़ है, उसकी प्राइस मूवमेंट है या स्टैंडर्ड डिविएशन है, इट इज़ लाइक अ लार्ज कैप, इट इज़ क्वाइट स्टेबल, अ बिट यू नो लो वोलेटाइल कंपेयर्ड टू अदर मेटल्स। सिल्वर की जब हम बात करेंगे तो सिल्वर इज़ बेसिकली अ बूस्टर एंड अ मिड कैप और अ स्मॉल कैप विदिन द प्रेशियस मेटल स्पेस। सिल्वर की जो क्वालिटीज़ है, कुछ हद तक सिमिलर है गोल्ड से, और कुछ हद तक थोड़ी-सी अलग है, व्हिच एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स योर इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड। One is silver is also good hedge against inflation. It has very low to negative correlation with equity. Uh, Third, which is more important, is whenever there is a bull market in precious metal, जब metals precious metals में रैली होती है, सिल्वर का जो परफॉर्मेंस है या रिटर्न्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू गोल्ड। So if you see the phase of 2010, 11, 12, when gold was doing well, silver was maybe clocking 2x return of gold. Again, 2018, 19, 20 में जब briefly gold did well, silver also delivered much higher returns than गोल्ड। बट जब रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं तो रिस्क भी ज़्यादा होता है, एंड इसीलिए सिल्वर की जो वोलेटिलिटी है, जो मैंने बात की है कि वो एक मिड कैप या स्मॉल कैप के तौर पे देखा जा सकता है विदिन द प्रेशियस मेटल कंपेयर्ड टू गोल्ड, उसकी वोलेटिलिटी इज़ एज़ इक्वल टू इक्विटी।
and it is very important when you are investing in silver, कि आप कब एग्जिट हो और कब एंटर हो और कब एग्जिट हो। एंड दैट इज द रीजन हमने सोचा एक कंबाइंड प्रोडक्ट दिया जा सकता है, बिकॉज मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स विल नॉट बी एबल टू टाइम द एंट्री एंड एग्जिट इन सिल्वर इन अ राइट वे, बट एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो में सिल्वर का एक्सपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So इसीलिए what we did is we combined these two assets, 50% in gold, 50% in silver. That's how the Edelweiss Gold and Silver ETF fund of fund will allocate to these two assets. And most importantly, इसमें क्या होगा, whenever one asset outperforms the other, so अगर मैं 50-50 से start करता हूँ, अगर silver outperform करता है and the exposure goes to 55%, इसको हम profit book करके we will bring it back to 50%. In this way, what will happen? Usually हमने देखा गया है कि जब जब silver starts performing, it performs very well और उसके बाद काफी drawdowns भी आते हैं because of its a high volatile nature. So in this way, we keep booking profits when silver is going up, and we keep allocating more to gold, and keep the risks within a certain range. So एक asset allocation के तौर पे आपका profit booking भी हो रहा है, so you are buying at lower levels and selling at higher level, which is buy low and sell high, automatically आपके पोर्टफोलियो में हो रहा है। एट द सेम टाइम यू गेट एक्सपोजर टू बोथ गोल्ड एंड सिल्वर in a much lower volatile way, rather than investing maybe directly into silver, or and you are clueless when to enter and when to exit. Uh, Second part, more about silver. So silver, why it is important to have silver? मैंने बात की तीन चार जो qualities है, but most importantly, silver also has a huge industrial usage. अगर हम gold की बात करें, तो gold की 50% जो usage है, it is maybe for jewelry or maybe investments, Yeah. and but silver का almost 50-60% जो है usage, it is it for industries. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन से इंडस्ट्री में यूज होता है? ऑल न्यू एज टेक्नोलॉजी। सो अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की, अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इन ऑल दीज यू नो equipments or electronic equipments, silver is used in a very high proportion कंपेयर टू मे बी गोल्ड। गोल्ड तो यूज होता ही नहीं है, प्लस केमिकल्स में यूज होता है सिल्वर, सो इंडस्ट्रियल यूसेज इज वेरी वेरी हाई फॉर सिल्वर। और मोस्टली न्यू एज जो टेक्नोलॉजीज है, इनकी डिमांड ओवर द नेक्स्ट 2-3 डिकेड्स ये काफी बढ़ने वाली है। इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल, मे बी वी आर जस्ट 1% ऑफ द पोटेंशियल डिमांड विच we can see over the next 5-10 years. Solar panels, because of renewable energy, clean energy shift for most of the countries. So the demand supply itself will take care of lot of price movement in silver. और सिल्वर ने काफी अंडर परफॉर्म किया है 2012 के पीक के बाद में। सिल्वर हैज नॉट रीच दैट पीक इवन टिल नाउ। so from timing perspective also, it is a good time to invest in silver for next 5-10 years. Gold we already know it's a good asset class, and a combined exposure आपके पोर्टफोलियो को एक काफी स्टेबिलिटी दे सकता है, especially when things are not going your way or things are not going right. Absolutely. I feel the most amazing thing about silver that really sets it apart from gold as a precious metal is it is not just a precious metal, right? जैसे कि आपने कहा उसके काफी industrial usages है, and Yes. I feel in a way silver को एक dual lens के थ्रू देखा जा सकता है। एक ऑब्वियसली प्रेशियस मेटल तो है ही, बट काफी हद तक उसको एक कमोडिटी के रूप में भी देखा जा सकता है। जब भी ये माना जाता है, या हम मैंने भी नोटिस किया है कि जब भी एक इकोनॉमिक एक्सपेंशनरी फेज आता है, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पिक स्पेस, जब भी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन स्टार्ट्स
expanding as the demand for silver as a commodity goes up, and ये काफी हद तक एक साइक्लिकल प्ले भी है, राइट? एंड Right. आपने बात की है कि टाइमिंग के बारे में कि अब तक उसने वो लाइफ टाइम हाई लेवल्स अचीव नहीं किया है, रीट्रेस नहीं किया है उस हाई लेवल को, और साथ ही साथ हमने इस कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में ही ये एस्टैब्लिश किया दैट the best days are yet ahead for the Indian economy. अब तक तो काफी सारे जो डेवलपमेंट्स है, जो सही मायनों में जो एक्सपेंशन है इकोनॉमी की, इट इज स्टिल अहेड ऑफ अस, वी आर Right. नॉट देयर येट. सो अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों कंसेप्ट्स को साथ में लेके ये समझा जाए, तो it would be fair to presume that silver as a commodity also has a very promising future, considering that most of its increment in prices will be driven by an expanding economy and expanding industries, and the demand for this as a feedstock, it will drive a lot of it. So I feel it's fantastic. For a very long time, people know about silver, but जो एक allocation की बात होती है वो काफी हद तक हम कर नहीं पाए थे, काफी सीरियसली ले नहीं पाए थे सिल्वर के allocation को. आई फील आपने ये भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया और दर्शाया कि कैसे इसे सही पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है. द एग्जांपल अराउंड गोल्ड बीइंग अ लार्ज कैप इक्विवेलेंट ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड silver being a mid small cap equivalent, and we realize each one has a role to play. It comes with its own Right. risk reward payoffs, but it has a role to play in a portfolio. तो जब हम प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं, निरंजन, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि अ, किस हद तक किसी निवेशक को प्रेशियस मेटल्स में एलोकेट करना चाहिए अपने पैसे Mhm. को. लाइक व्हाट इज, आई नो ऑब्वियसली हर एक का बहुत ही अलग है सिचुएशन पोर्टफोलियो के हिसाब से, कईयों के कुछ और परसेंटेज हो सकता है, कुछ और, बट व्हाट इज द राइट वे टू एटलीस्ट डिसाइड दिस परसेंटेज एंड अप्रोच दिस थिंग, कि कितना एलोकेट करना चाहिए, एटलीस्ट द राइट लाइन ऑफ थॉट फॉर दिस. Right. So, the funny part of this is, uh, whenever there is a new asset class, generally एक answer होता है maybe 5 to 10% or 10 to 15% allocation. But I truly believe that doesn't work for many investors. और जैसे आपने सही बताया, हर एक का नीड एक अलग हो सकता है. तो मैं इसको दूसरे तरीके से देखना चाहता हूँ. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई निवेशक है जो इक्विटी में आज इन्वेस्ट कर रहा है, and he doesn't want his entire portfolio to be very volatile, especially years like 2020, years like 2008, years like 2011, maybe 2018. अ, ऐसे इयर्स में अगर उसको रिस्क नहीं लेना है इक्विटी पोर्टफोलियो में उसके और ओवरऑल पोर्टफोलियो में, तो फॉर दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स द एलोकेशन टू सच काइंड ऑफ फंड कैन बी हायर. इट कैन बी अराउंड 20-25% ऑल्सो. और दूसरे एक इन्वेस्टर्स है जो यंग इन्वेस्टर्स है, काफ़ी रिस्क ले सकते हैं. दे आर डूइंग एसआईपीज़ एंड ऑल. एंड इनफैक्ट मैंने देखा है काफ़ी इन्वेस्टर्स का बिहेवियर काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. दे इन्वेस्ट मोर व्हेन इक्विटी मार्केट्स आर फॉलिंग. इफ यू आर दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, then the allocation to such asset class can be lower, maybe 5% or so. क्योंकि आप यंग हो, you have a longer period to go, then the allocation towards equity or high risk, high reward kind of asset class could be higher. So Yeah. these are two things. दूसरे एक थर्ड तरीके के भी क्लाइंट्स हो सकते हैं who want to take tactical calls within the asset allocation. So एक तो होता है strategic asset allocation, दूसरा होता है कोर एंड सैटेलाइट, जहाँ पे आपको कुछ टैक्टिकल कॉल्स लेने हैं. और दोज़ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर उनको लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर हैज़ नॉट परफॉर्म्ड वेल, एंड दे मे परफॉर्म वेल इन maybe near future, uh, then maybe the वहाँ पर भी allocation can be maybe 20-25% also. But gradually then you'll have to reduce when these both the metals start outperforming. And one very interesting point in terms of timing is looking at the dollar index, because historically हमने देखा है both these silver and gold has a very high inverse correlation with dollar index. Or it is very obvious because gold is Yeah. seen as a very safe haven after US dollar. तो जब यूएस डॉलर पीक आउट होता है एंड इट इज स्ट्रेंथनिंग, यूजुअली गोल्ड एंड सिल्वर अंडर परफॉर्म करते हैं. और हमने देखा पिछले 2 साल 1.5 साल से डॉलर इंडेक्स या फिर डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बड़ी है अगेंस्ट मैनी अदर करेंसीज.
but at some point in time वो peak out होगा, और if US economy slows down and interest rate you know hike cycle plateaus or ends, then dollar index will start coming back to its normal level. Hmm. एंड यूजुअली दैट इज द टाइम जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर आउट परफॉर्म करते हैं. सो काफी कुछ इन्वेस्टर्स से हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आल्सो वांट टू एलोकेट सम टैक्टिक और गिव सम टैक्टिकल एलोकेशन टू दिस एसेट क्लास. तो वहाँ पे देन द एलोकेशंस कुड बी हायर. सो इट्स वेरी डायनामिक, and I may not have one answer, but it's very, very dynamic, and that is where distributors and advisors and people like you can help your investors and to take them right call. Absolutely. So, Niranjan, as we move towards the end of my asking questions, this is perhaps the last one from my end, and Yes. we'll pick a few from the comment section. I'm really inquisitive, curious. You have been handling products for a very long time. You've seen quite a number of cycles, and also dealt with quite a number of investors, I'm sure, right? And according to you, what are Hmm, the biggest mistakes that you typically notice investors of every hmm. generation repeat, which you do not want the investors of this generation to, repeat once again? So, what are the mistakes that you've observed in the past that you want to really warn our investors about while it comes to Right. investing, obviously? Right. So mistakes have been very common. Uh, you know, uh, the most common mistakes, and I may sound very repetitive, but these are common mistakes. And most importantly, the biggest mistake is काफी investors, including us, actually, we don't realize that we are doing those mistakes, and that's where it comes from our biases. Yeah, And in fact, I had posted this. My 1-year-old son, and we were playing something, was clearly displaying the recency bias. yeah, And so actually, all these biases are, preloaded in our head. Or most 90% of our mistakes are usually come from biases. The best yeah, way, and some of the common are recency bias, looking at recent performance and increasing allocation to that. The second thing is, when everyone is fearful, बाकी लोग भी डर जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं, and we don't invest more into the asset class if it is not doing well. I was having a call with one investor recently, who had invested heavily in offshore funds. Now yeah, he invested, and in fact he is doing very well because he's continuing his SIP and all, but still he is very fearful. yeah, And why? He had a good knowledge about the regions where he's investing, whether it is China or US, and he was convinced कि अगले 5 या 10 साल में both these regions would do well, both these themes would do well. लेकिन अभी मे बी काफी रिटर्न्स खराब है, तो मैं अभी एग्जिट हो जाता हूँ, एंड देन once markets stabilizes, I will come back. So we forget, the biggest mistake is we forget that markets actually uh, are always way ahead of the curve, right? स्लो डाउन आज होने वाला है, इसलिए पिछले 1 साल से रिटर्न्स खराब है, बट यहाँ से अगले 1 साल में मार्केट्स, एंड मार्केट्स include everyone like us, right? We yeah, start looking at next 1 year or 2 years and 3 years, and that gets priced in into the market, whether it is debt market, equity market, or any market. yeah. uh, that is actually one biggest mistake which we have not seen any correction, that we forget that market actually looks 1 or 2 years ahead. हमको लगता है कि आज खराब है मीन्स इट विल स्टे लाइक दैट, इट विल चेंज, लाइक हमने देखा कि जुलाई मंथ वाज वेरी गुड फॉर इक्विटीज, विद इन अ मंथ इट वाज अप 8-9%, because Mm, crude oil corrected, it stabilized there. There were indications that the interest rate hikes by whether it is RBI or US might stabilize. mm, Inflation is cooling. So अगले maybe what people were expecting from equity, maybe 10-12% in a year's time, उसका 80-90% आपको एक महीने में मिल गया. mm, So mm. that I think so is the biggest mistake, along with many other common mistakes जो है recency bias, availability bias, and Yeah, so that I think so we need to correct a lot. And absolutely. a systematic way of investing is the best way to correct those biases. Automate your investments.
SIP is a great way. Even a lot of people forget that आपको जब exit भी करना है, SWP or STP is a great way to systematically withdraw your money. So automate your actions, जहाँ पे आपके biases will not influence your actions. Absolutely. I feel this is a whole subject on its own, behavioral biases के बारे में अगर बात करना चाहे, so there's, we can keep talking about it, continuously. I feel एक बहुत ही important message आपने हमारे viewers को दिया कि, if I have to, summarize it, एक है that please understand that the markets are wiser than you. Please do not try to assume that you are smarter than the market. I feel the biggest mistake that an investor makes is assuming that he makes no mistakes, right? So वो काफी हद तक आपको पीछे खींच सकता है, एंड काफी बिहेवियरल बायसेस होते हैं, और बिहेवियरल बायसेस की खासियत ये होती है कि आपको पता नहीं चलता कि यू आर फॉलोइंग विक्टिम टू इट, और वो हाइंडसाइट में ही पता चलता है. हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20 एनीवेज. सो उसे मिटिगेट करने का सबसे आसान तरीका होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का सबसे आसान तरीका आज के डेट में, मोस्ट efficient and most effective तरीका होता है SIPs. Just commit to it and just let it be. Okay, so you don't really need to bother about it much. So Niranjan, in the interest of time, I'm going to pick one question from the audience. This question is around gold and silver, and the question is, what kind of external market forces, or if what kind of external market forces could affect commodities like gold and silver? So, what could trigger a turn in the prices, etc. Right. So जैसे मैंने बताया था, the closest correlation, which is the inverse correlation, or the closest relation with for these commodities is with the US dollar, is what we have seen over the many years. And over last 30-40 years, if you have seen, if you are able to get this thing right, you can make a lot of money in this asset class. The other drivers, of course, for silver is the industrial usage. So if there is an economic slowdown, and especially for electronics or goods wherein silver is being used, then it may impact the prices of silver. Uh, the other thing is also, if equity market does very well, usually then gold doesn't do well, because then everyone runs into equity market and people don't look at other safe haven options. So these are 2-3 things which actually impact the prices of gold and silver over a medium to longer period of time. Yeah. So I'm seeing काफी सारे comments है और request भी की जा रही है कि वो लिया जाए. But guys, please write to us at research@fisdom.com. We'll try and resolve most of these. Try and get back to you with response. But आज के लिए, समय की पाबंदी के वजह से we'll have to bring this conversation to an end. But please do write to us. You can write to us at ask@fisdom.com, or to research@fisdom.com. That's our team. We are handling research. We'll try and get back to you on it. So Niranjan, this brings us to the close of this conversation. I feel it was a superbly insightful conversation. We spoke about a variety of things, right from how are you viewing the markets. I feel some amazing stuff in the way you categorize those three balance sheets. You spoke about the government, corporate, and individual balance sheets. I feel that's a great perspective to look at things. We also spoke about investing directly into equities versus mutual funds. You also explained how mutual funds are a segue to effective investing into equities directly, and not the other way around in most cases. So that was amazing. We spoke a lot about कि कैसे gold और silver एक important asset classes है, और एक बहुत ही novel सा concept के बारे में हमने बात किया, जो कि है allocating towards silver as an asset class, जो कि बहुत common नहीं है, बहुत लोगों को बहुत लोगों के portfolios में नहीं भी होंगे. So I feel that's you shared some great insights on that. So Niranjan, I'm so glad we had this conversation. I totally enjoyed it. There was so much for me to personally take away from this conversation. I am really glad that we had this conversation, and grateful that you were able to share your time and insights with the audience and me today. Thank you so much, Nirav. Pleasure being here.
and look forward to meeting you very soon. Thank you. Same here. Thanks a lot, Niranjan. Have a great day. Guys, this video is available on the same link. Please feel free to watch it once again, take notes. But there are some hidden nuggets of wisdom right here. So you really want to listen to some very important pointers that Niranjan made. So we'll see you around really soon with yet another episode of the Fisdom Wealthcast with yet another super interesting guest really, really soon. Stay tuned, follow us on social media. Thank you, guys. Thank you, Niranjan.